ये लाइव तस्वीरें His Excellency Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, and Her Excellency Ms. Pathong Hanshinawat, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, as chairpersons to the signing ceremony today. The first document to be signed is Joint Declaration on the Establishment of Thailand-India Strategic Partnership, signed by Mr. Marit Sangyeonbong, Minister of Foreign Affairs of Thailand, and Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs of India. Please proceed to the table. Excellency. The second document to be exchanged is Memorandum of Understanding between the Ministry of Digital Economy and Society of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Electronics and Information Technology of the Government of the Republic of India on cooperation in the fields of digital technologies. Exchanged by Mr. Prasit Chantharaluangthong, Minister of Digital Economy and Society, and Dr. S. Jaishankar, Minister of External Affairs of India. Please proceed to the position. Thank you, Your Excellency. The third document is Memorandum of Understanding between Sagamala Division, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of the Republic of India, and the Fine Arts Department, Ministry of Culture of the Kingdom of Thailand, for development of National Maritime Heritage Complex at Lertor, Gujarat. Exchanged by Mr. Phanongbut Chantarachot, Director General of the Fine Arts Department of Thailand, and Mr. Vikram B.C., Foreign Secretary, Minister of External Affairs of India. Please proceed to the position. The fourth document is Memorandum of Understanding between National Small Industries Corporation Limited of the Republic of India and Office of Small
Medium Enterprises Promotion of the Kingdom of Thailand, exchanged by Ms. Panita Chinawat, Deputy Director General, Acting Director General of Small and Medium Enterprises Promotion of Thailand, and Mr. P. Kumaran, Secretary, Ministry of External Affairs of India. Please proceed to the position. Please exchange the document. Thank you, Your Excellency. The fifth document is Memorandum of Understanding between the Ministry of Development of Northeastern Region of the Republic of India and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand on cooperation in artisanal craft and development of artisanal communities, exchanged by Mr. Julawat Narintharangu, Director General of Thailand International Cooperation Agency, and Mr. P. Kumara, Secretary, Ministry of External Affairs of India. Please proceed to the position. Please exchange the document. Thank you, Your Excellency. The sixth document is Memorandum of Understanding between the Northeastern Handicraft and Handlooms Development Cooperation Limited of India and Creative Economy Agency of Thailand, exchanged by Mr. Pishit Virankabuk, Deputy Director of Creative Economy Agency of Thailand, and Mr. Nagesh Singh, Ambassador of the Republic of India to the Thailand. Please proceed to the position. Thank you, Your Excellency. Next, we welcome the intention of the cooperation between the Indian Institute of Technology, Bombay, and Chulalongkorn University. Thank you, Your Excellency. And the last, we also welcome the intention of cooperation between the Indian Institute of Technology, Bombay, and King Mongkut's Institute of Technology, Lat. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, the signing ceremony is now completed. Next is the special presentation of the World Pitaka Chaya Phonetic Recitation, King Bhumibol Adulyadej and Queen Siriki, commemorative 2016 editions. Please proceed to the Tipitaka. This is a gift of peace and wisdom for all, in celebration of the 6th birthday anniversary of His Majesty King presented by Her Excellency Ms. Pathom Thanchinavat, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to His Excellency Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. Next, we will now begin the press conference. Thank you, Your Excellencies. เรียนท่านนายกรัฐมนตรีเดชรมนตรีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะในนามของรัฐบาลและประชาชนไทยดิฉันขอต้อนรับ
ท่านนายกนเรศวร โมทีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมประชุมผู้นำบิมสเต็กครั้งที่ 6 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าไทยและอินเดียได้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการก้าวสำคัญนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและมีพลวัตระหว่างสองประเทศเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศและของภูมิภาคนอกจากการประกาศการยกระดับความสัมพันธ์แล้วดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรียังเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจจำนวนหลายฉบับครอบคลุมความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการพัฒนาการศึกษาวัฒนธรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในระหว่างการหารือดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรีตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงความร่วมมือทางอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการซ้อมรบร่วมและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการรับมือกับภัยคุกคามทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ในด้านเศรษฐกิจอินเดียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยเมื่อปี 2567 มีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ดีตัวเลขนี้ยังไม่สะท้อนเห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของทั้งสองประเทศดิฉันจึงเสนอให้ร่วมกันเจรจาปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีไทยอินเดียและอาเซียนอินเดียให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการลงทุนระหว่างกันเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เมียนมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยและอินเดียแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสองประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาโดยเร่งด่วนและในระยะต่อไปเราทั้งสองประเทศก็จะให้ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูที่ประสบภัยอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของกันและกันในการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเห็นพ้องที่จะผลักดันโครงการถนน3ฝ่ายไทยเมียนมาอินเดียให้มีความคืบหน้าและดิฉันได้นำเสนอโครงการ Land Bridge ของไทยที่จะเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการเส้นทางขนส่งสินค้านอกจากนี้ไทยยังมีแผนพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าหลักที่เชื่อมต่อกับท่าเรือฝั่งตะวันออกของภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งโครงการเหล่านี้จะเปิดโอกาสสำหรับการเป็นหุ้นส่วนร่วมการลงทุนและโลจิสติกส์ระหว่างไทยกับอินเดียทั้งนี้ดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางพุทธศาสนาหรือ Buddhist Circuit ให้ขยายความควบคุมถึงรัฐอื่นๆและสำคัญอื่นๆโดยเฉพาะรัฐกุจราตและซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสถานที่สำคัญของประเทศไทยและประเทศอื่นๆในบิมสเทคในปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับอินเดียมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยมีมาตรการอำนวยความสะดวกในการตรวจตาให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายดิฉันยังสนับสนุนการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและเปิดเส้นทางการบินใหม่ไปยังเมืองน่าเที่ยวของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยและอินเดียยังเห็นพ้องที่จะจัดตั้งกลไกการหารือระหว่างกรมการกงสุลเพื่อให้คุ้มครองดูแลชาติของกันและกันอีกด้วยดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเวทีผูกภาคีต่างๆซึ่งรวมไปถึง BIMSTEC อาเซียน BRICS และ OECD โดยประเทศไทยพร้อม
ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือที่ไทยเป็นสมาชิกทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศโดยสรุปการเยือนไทยในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีโมทีและการประกาศยกระดับความสัมพันธ์ไทยอินเดียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะปูรากฐานความร่วมมืออันลึกซึ้งระหว่างกันยิ่งขึ้นต่อไปขอบคุณค่ะ Your Excellency, प्रधानमंत्री सिनाबाद, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार, स्वागत खाप। इस खूबसूरत स्वर्ण भूमि में मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के सत्कार के लिए मैं प्रधानमंत्री सिनाबाद का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। 28 मार्च को आए भूकंप में हुई जनहानि के लिए मैं भारत के लोगों की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और हम घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। फ्रेंड्स, भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने संबंध हमारे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे जन जन को जोड़ा है। अयोध्या से नालंदा तक विद्वानों का आदान प्रदान हुआ है। रामायण की कथा थाई लोक जीवन में रची बसी है और संस्कृत पाली के प्रभाव आज भी भाषाओं और परंपराओं में झलकते हैं। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री सिनावात ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया। पिछले वर्ष भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को भारत से थाईलैंड भेजा गया। यह बहुत खुशी की बात है कि 4 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिला। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले पवित्र रेलिक्स को भी थाईलैंड दर्शन के लिए भेजा जाएगा। इस वर्ष भारत में महाकुंभ में भी हमारा पुराना कनेक्शन दिखाई दिया। थाईलैंड समेत अन्य देशों से 600 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सभा का हिस्सा बने। इस आयोजन ने वैश्विक शांति और सामंजस्य का संदेश दिया। फ्रेंड्स, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। हम सहमत हैं कि हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। हमने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन ऐसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। आपसी व्यापार, निवेश और बिजनेसेस के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर हमने बात की। एमएसएमई, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी सहयोग के लिए समझौते किए गए हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में सहयोग को बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा सुविधा देनी शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, आसियान भारत का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इस क्षेत्र में मैरीटाइम पड़ोसी देशों के नाते क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि में हमारे साझा हित है। भारत आसियान यूनिटी और आसियान सेंट्रलिटी का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के मैरीटाइम इकोलॉजी पिलर को लीड करने के लिए थाईलैंड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, कल बिम्स्टेक समिट में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। थाईलैंड की अध्यक्षता में इस फोरम के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग को नई गति मिली है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री और उनकी टीम का अभिनंदन करते हैं। एक्सेलेंसी, एक बार फिर स्वागत और सम्मान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और त्रिपिटका की भेंट के लिए आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खाप खून खाप। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण बैंकॉक से, जहां पर भारत थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थे वहां पर आपने सुना उस जो जॉइंट स्टेटमेंट्स था और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो भारत में जो जिस तरह से उनका स्वागत किया गया वहाँ से उन्होंने उसकी शुरुआत की और कहा कि दोनों देशों के बीच में जो सदियों पुराने संबंध रहे हैं उसके लिए उसकी बात उन्होंने कही। शुरुआत उन्होंने कही कि 28 मार्च को जो भूकंप आया उसके लिए उन्होंने संवेदना व्यक्त की और कहे कि गहरे और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़ा हुआ है। और बड़ी बातें अगर जो प्रधानमंत्री की जो संबोधन रहा उसकी बात करें तो भूकंप प्रभावितों के लिए भारत की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और इसने दोनों देशों को आपस में बांधे रखा है। हमारी एजेंसियां मानव तस्करी के खिलाफ मिलकर काम करेंगी। कई महत्वपूर्ण समझौते हुए और समझौतों के साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिन बातों को रखा, प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर आगे बढ़ेंगे अब दोनों देश। उन्होंने कहा कि फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ फिनटेक कनेक्टिविटी को भी बढ़ाना होगा दोनों देशों को। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर विश्वास रखते हैं और दोनों ही देशों ने इन्हीं सिद्धांतों पर अपनी सहमति जताई। जी बिल्कुल, और दोनों देशों के बीच में उन्होंने कहा कि हम विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का निर्णय हुआ है, ये भी जानकारी प्रधानमंत्री ने दी। और उससे पहले जो एमओयू साइन हुए उसके ज़रिए भी हमने देखा। बिम्स्टेक समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और जो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें थाईलैंड का विशेष स्थान है। बिम्स्टेक समिट में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूँ, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। और इसके साथ ही